I really hope you people are ready with your calculators, ready with your books. Now, this is the last chapter of our syllabus, statistical data handling, and it is involving little mathematics. Some of you might fear this chapter, but there is nothing to be afraid of. There are four sections in this chapter, and the second section, that is test of significance, it is divided into two F test and student T test. Student T test are again of two types, paired and unpaired. So there are only few numbers of formula you need to remember. One for confidence limit, one for F test, so it becomes two. There is one for paired, one for unpaired, one formula for linear regression, one formula for correlation coefficient, and one formula for Hughes test. So overall, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you remember 7 formulas from this chapter, you can score full marks. Okay, I will not go in this sequence. I will go from simplest to more complicated. Okay, so let us start with the simplest one, rejection of result, Q test. Now, rejection of result or Q test is also called as reliability of result. Okay, suppose you are performing titration. Okay, and a solution is given to you and you want to find its concentration by titration method. Suppose HCl दिया है, उसका concentration निकालना है आपको. You are using standard NaOH solution. You have taken say 5 readings for the same solution. एक reading आया, suppose first reading you got say 10.1 ml. Second reading you got 10.0 ml. Third reading again you got 10.0 ml. Fourth reading that you have got is say again 10.2 ml. But the fifth reading you got was 13.5 ml. Okay, so this is my results obtained from the experiment. Should I reject this 13.5 ml or should I accept this 13.5 ml? To determine it, there should be a scientific method to whether to accept or reject the result. Okay, so this Q test will solve the problem. Have you understood why Q test is used? For this chapter, I will ask you too many questions क्योंकि मुझे पता होना चाहिए हर एक चीज आपको समझी या नहीं. ओके, तो आपको वो टेक्स्ट बॉक्स ना बार बार ओपन करना पड़ेगा ये लेक्चर में. आपको कैलकुलेटर भी यूज करना है, आपको लिखना भी है. तो ये लेक्चर में आपको भी मेहनत है. इसके पहले सिर्फ टीचर को ही मेहनत रहती थी, आपको सिर्फ देखना रहता था. इसमें आपको भी आज मेहनत है. ठीक है, चलो. So statistical figure obtained from a set of result are of limited value by themselves. मतलब वो एक वैल्यू है, वो और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, वो एक वैल्यू है. रिजल्ट इज अ वैल्यू. इट इज नॉट डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, इट इज जस्ट अ वैल्यू. Analysis of the result can be considered in two main categories. One, reliability of the result, and second, comparing the result with a true value or with other set of data. If I want to simplify this, if you see numbers obtained from your experiment, okay, you can look it at in two ways. Those results can be considered in two ways. One, you will compare your value with the true value. But what if true value is not known? So you will compare your value with other sets of data. मतलब A batch का अगर result आया है, there is someone with microphone on. शुभम, समझो A batch में एक स्टूडेंट का रिजल्ट आया है और उसको पता नहीं था उसका रिजल्ट सही है नहीं है, तो वो क्या करता है, बाजू वाले को पूछता है, अरे तेरा रिजल्ट क्या आया. सो व्हाट द पर्सन इज डूइंग, द पर्सन इज कंपेयरिंग हिज रिजल्ट विथ अदर सेट ऑफ रिजल्ट. ओके, सो लेट्स गो फर्दर. A most important consideration is to be able to arrive at a sensible decision as to whether certain result may be rejected. It must be stressed that a value should be rejected only when a suitable statistical test has been applied. वो वैल्यू पे कोई तो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई किया है, टेस्ट अप्लाई किया है, और अगर उसमें वो फेल होता है तो ही वो वैल्यू को रिजेक्ट करना है, वो रिजल्ट को रिजेक्ट करना है. और where there is an obvious chemical or instrumental reason that could justify the exclusion of the result. मतलब आप टाइट्रेशन कर रहे हो और आपके सामने वो जो नॉब रहता है ब्यूरेट का वो फेल हो गया और सडनली 10-12 ml या 10-12 ड्रॉप सडनली आपके कोनिकल फ्लास्क में गिर गए एंड यू गॉट द कलर चेंज.
but you saw that instrument failed no in front of you, so you will reject that result. और हमारे लैब में होता है, जो पार्टनर रहते हैं, एक पार्टनर बोलता है अरे मैं ये दो काम करता हूँ और दूसरा पार्टनर दूसरे दो काम करेगा. ओके, समझो वो बीकर में सॉल्यूशन, कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन बनाना है, उसमें ए बी सी डालना है, वो है 5 में 10 ml 15 ml. वो दूसरे पार्टनर ने बना के लाया, पहले पार्टनर ने ब्यूरेट फिल किया, नाउ दे हैव स्टार्टेड डूइंग टाइट्रेशन. तो उसने क्या किया, दूसरे पार्टनर ने ए बी सी लाया, लेकिन वो 5 ml 10 ml 15 ml नहीं, 5 ml 10 ml और 10 ml ही लाया. But when they conducted the entire experiment, when both of them talked, they understood their mistake. So there was obvious chemical mistake. So if that is the case, you can deny that result, exclude that result. But in both these cases, the instrumental or chemical reason you exactly know and you can justify why you excluded the result. अगर केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल रीजन नहीं है तो कोई तो स्टैटिस्टिकल रीजन होना चाहिए. ओनली देन यू कैन रिजेक्ट और एक्सक्लूड दैट रिजल्ट. Too frequently, however, there is a strong temptation to remove what may appear to be bad result without any sound justification. जैसे वो जो 5 रिजल्ट मिले थे टाइट्रेशन के, तो कोई तो सोच सकता है ये 13 ml का है ना, अरे जाने तो इसको एक्सक्लूड करते, वो सर को दिखाते ही नहीं है. ओके, इट मे हैपन, you may have a temptation to exclude a result which appear to be bad, but it may happen that that can also be justified. There is no proper justification of removal of that result. Now consider the following example. The following values were obtained for a determination of cadmium in a sample of dust. कोई तो dust sample है, उसमें कितना cadmium है वो measure किया है. The results were 4.3 microgram per gram, 4.1 microgram per gram, 4.0 microgram per gram, and fourth one is 3.2 microgram per gram. Should the last value 3.2 be rejected, given is for sample size 4, critical Q value are 0.831. Now focus on a table which is on right hand side. क्या है ना, साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए Q वैल्यू डिटरमाइन किए हैं. अगर सैंपल साइज इज 4, Q वैल्यू इज दिस मच. इफ सैंपल साइज इज 5, Q वैल्यू इज दिस मच. और सैंपल साइज 6, Q वैल्यू इज दिस मच. अभी ये टेबल 10 तक है, लेकिन ये एक्चुअल टेबल बहुत बड़ा है. ओके, सो दिस टेबल, दिस वैल्यू विल बी गिवन यू इन एग्जाम. आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, सैंपल साइज और उसका वैल्यू दिया जाएगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. द Q टेस्ट may be applied to solve this problem. Formula for calculating Q is mod of questionable value minus nearest value divided by largest value of the set minus smallest value of the set. Now before I proceed, I want you people to write down this formula. I will give you 30 seconds for it. Hurry up. Okay, I assume that you have written it. So questionable value is 3.2, nearest value is 4.0, largest value is 4.3, smallest value is 3.2. I want you people to calculate Q value. Everybody start calculating. Once you calculate, post that in the chat box. So one student has calculated. Let me see what others are calculating. Okay, very good. Many students have calculated. Let us see what I have calculated. मैं गलत हुआ हूँ क्या कहीं पे? So Q value is mod of. Okay, I hope you understand what is mod. You will अगर 3.2 माइनस 4.0 उसका एक्चुअल वैल्यू क्या आता है, -0.8, लेकिन मॉड हमेशा पॉजिटिव ही रहता है. सो इट इज 0.8 डिवाइडेड बाय 1.1, इट इज 0.727. नाउ वो टेबल में फॉर सैंपल साइज 4 Q का वैल्यू क्या है, 0.831. इट इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम. ओके, एग्जाम में ये दिया रहेगा. नाउ 7.727 is smaller than the critical Q value. Okay, so Q calculated is 0.727 and Q critical for a sample size of 4 is 0.831, which is larger than the value that you find out. Hence the result 3.2 microgram per gram should be retained. It should not be rejected. If the calculated value of Q exceeds the critical value, then the questionable value may be rejected. Have you understood this? If you have any doubt,
आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क यू डाउट्स। याद रखो, आपने जो क्यू फाइंड किया वो क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो रिजल्ट को रिटेन करना है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करना है। आई विल गिव यू 1 मिनट टू थिंक अबाउट दिस प्रोसीजर, दिस मेथड। कुछ डाउट है तो पूछेंगे आप, ओके? विल आई विल वेट फॉर 1 मिनट। Okay, let us proceed because no one asked any doubt. So I will proceed now. After we are done with Q test, we will jump to next simple thing, confidence limit.